Good morning, everyone. On behalf of Lifelong Learning and Extension Cell and NSS Cell of our college, I extend a warm welcome to all lovely ladies connected virtually with us and all real gentlemen who acknowledge, appreciate, and support the women in their lives. आज दिनांक 8 मार्च आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस संपूर्ण जगभर साजरा केला जातोय. हा दिवस स्त्रियांच्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजकीय उपलब्धींचे कौतुक करण्यासाठी, अभिनंदन करण्यासाठी, तसेच स्त्रियांना दैनंदिन जीवनात आणि व्यावसायिक जीवनात भेडसावणाऱ्या समस्या अधोरेखित करण्यासाठी साजरा केला जातो. कोविड-19 या जागतिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर जी वेगवेगळी आव्हाने जगासमोर उभी ठाकली आहेत, त्या संदर्भात या वर्षीचा हा आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आपण साजरा करीत आहोत. खरं तर हा दिवस 1911 साली पहिल्यांदा औपचारिकरित्या साजरा झाला. तो एका चळवळीच्या, एका संघर्षाच्या रूपात. राईट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेस हा अधिकार मागण्यासाठी जरी याची सुरुवात झाली, तरी आज आपण या दिवसाला एक सेलिब्रेशन म्हणून बघतो आहे. आज व्हॉट्सॲपचे विविध मेसेजेस वेगवेगळ्या वयोगटातील लोक, वेगवेगळ्या आर्थिक व सामाजिक गटातील लोक एकमेकांना पाठवित आहे, ही खरंच एक समाधानाची बाब आहे. To take the program ahead, at the outset, I humbly request Principal of our college, Dr. Sujit Ji Maitre, to express his thoughts on the occasion and guide us. So, thank you, madam. Happy International Women's Day to all. And this is for all women as well as men. Because the day is celebrated with some purpose. And purpose is to ensure gender parity or gender equality. There was a research carried out by 2 Indian women and 1 UK woman to establish the linkage between this gender parity and economic growth. And they could find that there is a strong relationship between this parity, that is gender equality, and economic growth. And therefore, that research paper was used by almost all the economists for their policy making. So once that was accepted as a policy background, it was expected that the world will develop and try to establish this gender parity. This research paper was established in or published in 2015, and we have say 5 or 6 years data after that, just to check out what has happened on that front. And to everybody's surprise, I'm talking not about the developing economies or underdeveloped economies. I am talking about all the economies, including the developed economies, wherein we assume that there is a gender parity. So the results are very surprising, and the growth over last 5 years is 0.01% towards gender parity. That simply means that we as a globe, we as what we can say, collectively failed in this establishment of gender parity. So that brings me to the next context, because there is a tendency nowadays to hold corona responsible for everything. And there was one more research carried out in this area, and that was related to who is affected more by corona, whether it is the gentleman or the ladies or women. And it was one more time established that the worst hit category is woman, that is the working woman. Simply because everybody was working from home, and the lady was expected to discharge the responsibilities of 2 things at a time, all persons of the home at a time available in the home. So it was a kind of what you can say torture on that working woman, and therefore it is said that the worst hit category is woman one more time. So that simply takes us to the importance of celebration of this day. As long as this day is celebrated internationally, right? We are at Nagpur, so we can say that it is also celebrated nationally. It is also celebrated at state level. It is also celebrated at so-called metros.
so-called district level. But unless and until this celebration goes to the rarest of the rare village, I think that the progress on that front of gender equality will be a distant dream. So it is a responsibility of all the learned people on the planet to go and try something in this area. As we are celebrating it, this should not be a day-long celebration. It has to be a consistent effort towards what we call as gender equality. And unless and until that happens, I don't think that the real sense of celebrating International Women's Day or attaching the happy word to International Women's Day will be futile. So my request to all of you who has joined this platform is to do something in this regard, and we are going to listen from a very learned professor on one of the important topics related to women, right? And it is coming from the legal background. So I welcome you, madam. I welcome you all to this fruitful discussion. I one more time say Happy International Women's Day to all. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Today, to celebrate the International Women's Day, we have organized a guest lecture on quite a relevant topic in the contemporary scenario: women's safety in the digital world, role of law and agencies, by Dr. Pratima Lokhande. It is my honor to introduce her. Dr. Pratima Lokhande is currently working as an assistant professor in the Department of Law of Dr. Ambedkar College, Dikshabhumi, Nagpur. She has completed her BA LLB and Masters in Law with specialization in business law from RTM Nagpur University. She has obtained her PhD from Santa Gadge Baba Amravati University on the topic Social Justice under the Constitution of India. She holds an experience of 15 years in teaching both undergraduate and postgraduate students. She has also obtained a diploma in cyber law. She has research experience in various fields of law such as contract law, business law, company law, cyber law, banking law, competition law, Hindu law, arbitration law, etc. She has to her credit several national publications and has conducted numerous professional training programs, conferences, workshops. She is a coordinator of legal aid clinic of her college and has organized various free legal aid and awareness programs. She has participated in mediation programs organized by District Legal Services Authority. She is also a recognized supervisor of law at Rashtrasanta Tukadoji Maharaj Nagpur University, Nagpur. I welcome Dr. Pratima Lokhande today, and I hand over the reins to her to take from here. Thank you. Ma'am, welcome. Thank you so much, Dr. Pranjali Kane, ma'am. First of all, I would like to thank respected principal, Dr. Sujit Maitre, sir, for giving me platform today. And it's my honor to be part of today's Women's International Day, whereby I have given the opportunity to express certain views relating to women's safety and women's rights when it comes to cyber law. So thank you so much, respected Sujit Maitre, sir. And of course, I would like to thank Dr. Pranjali Kane, ma'am, that she is coordinating with me about the topic and about everything. And thank you so much, ma'am, for the organization of this program. I also would like to take on a record at the presence of other respected faculty members of SBCT College. And hereby I would like to start my presentation. I'm sharing my screen here, my PPT, and then I'll start. Just give me a second. Sure, ma'am. Yeah. मॅडम त्यांना होस्ट बनवा. सर केलेलं आहे शेअर, त्यांना पार्टिसिपेंट शेअरचा ऑप्शन आपण ओपन केलाय. Now I hope this my presentation is visible to all of you. Yes, it is getting started, ma'am. Yeah. Students, please keep muted.
Please let me know once it started. Ma'am, it is not visible right now. It is saying your screen sharing is paused. Oh. I can say it now. Can you see this? Ma'am, I'll make you the host. Yeah, please stop it. Yes, ma'am. I have already made you the host now. I'll try. मॅडम आगम पटले होस्ट झालेले आहेत, मॅडम नाही झाले. Oh, I'm so sorry. Agam Patle, please madam la host करा तुम्ही. Agam Patle. Can you please now see? Yes, I can see. Yes, this is visible, ma'am. Yeah, ma'am. Now start. Okay, so dear students, my topic for today is women's safety in digital world, and of course, I'm going to discuss with you the role of law and agencies. सगळ्यात आधी मला सगळ्यांना इंटरनॅशनल वुमन्स डेच्या शुभेच्छा द्यायच्या आहेत. All women and also all men who are supporting us and who are coordinating with us for fulfilling all our aims and dreams. So a happy Women's Day to all of you. And I hope that each and every woman, as it is written over here, it is taken from one quote that a woman in any form shall be celebrated and honored. So with this note, I would like to start with the major meaning of cyber crime and victimization of women. जैसे कि आपको पता ही होगा, in COVID-19 and the lockdown, these are the mostly used terms, and in this we have also seen that when women are at home, when they are doing their work from home, as rightly pointed out by Dr. Sujit Maitre sir, that they are victimized and there is a high rise in the cases. But before dealing with this problem, I would like to draw your attention to cyber crime and other victimization of women. जैसे आपको पता ही होगा कि ये वर्ड जो है साइबर क्राइम, आपने पढ़ा है इंटरनेट के माध्यम से या डिजिटल प्लेटफॉर्म या कोई भी केसेस आप जब न्यूज़पेपर में रीड करते हैं या टीवी पे आपको दिखाते हैं. But as a layman, we have less idea about what is cyber crime, right? So ये digital word, virtual word, these are the common terms जो हम use करते हैं. But what is the exact meaning of cyber crime and how we get victimized to it? And when it comes to women, I can see that woman is the vulnerable section of society who, because of other, we can say, disabilities, or because of other, we can say, the other things which she cannot view as a layman, she is always victimized. And hereby I say victimization of women means what? Because it is considered that she is a soft target. यानी हर एक फील्ड में जब वुमन काम करती है तो उसे कहा जाता है कि ये सॉफ्ट टारगेट है. शी कैन बी सप्रेस्ड एंड शी कैन बी डिप्रेस्ड एंड देयरफॉर शी कैन बिकम अ विक्टिम. बट जब हम साइबर वर्ल्ड या साइबर स्पेस की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि साइबर क्राइम होते कैसे हैं और वो विक्टिम जो विक्टिमाइजेशन होता है वो वुमन का ही क्यों ज्यादा हो रहा है. ऐसा नहीं है कि डिजिटल वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ वुमन का ही विक्टिमाइजेशन होता है. मेन आर आल्सो देयर एंड वी कैन से ऑल द नेटिजन्स माने जो लोग इंटरनेट यूज करते हैं उन सबका ही यहाँ पे वी कैन से दे बिकम अ विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम. वो विक्टिम बन जाते हैं कोई ऑनलाइन फ्रॉड के या कोई ऑनलाइन जो भी क्राइम के या जो भी स्टॉकिंग है
any kind of virus attacks related to computer program hai, they become victims. But here I am specially targeting the women group today because very less women and girls in the society, they are aware about their rights. And when it comes to cyberspace यानी cyber वर्ल्ड जहाँ से हम कनेक्टेड होते हैं, आज डे टू डे लाइफ में जब हम मोबाइल का यूज करते हैं, हम लैपटॉप का यूज करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं, ईमेल्स के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन होता है, तो वी कैन नॉट think our life without computer, without internet, without this digital platform. So मैं आज का टॉपिक डेडिकेट करना चाहूंगी वुमेन, जो कि वो अपने राइट्स जाने और वो कुछ टर्म्स विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम सारे साइबर क्राइम डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होगा. सो आई हैव टेकन अप ओनली सर्टेन साइबर क्राइम and whereby we can actually feel, we can sense that we are it is happening with us and we are becoming victim of that. So of course with the increase of technology, our victimization of women is also increased in India, especially talking about India. There is one enactment called as the Information Technology Act, which is enacted in India to deal with the cyber crime. Now, I think that in this slide, I have mentioned cybercrime as a emerging challenge because it is talking about security of women. Now, when we talk about security of women, it is to be provided. It is to be provided by government machinery. It is to be provided by law. So, हमारे देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज IT Act 2000 ये बनाया गया है so that साइबर स्पेस में जितने भी साइबर क्राइम है उसे डील कर सके और उसे पिनलाइज कर सके मींस जो भी पर्सन ऑफेंडर है उसे हम उसके तहत पिनल प्रोविजंस के तहत उन्हें पनिशमेंट दे सके, सजा दे सके. दिस इज द एम ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. मूविंग फर्दर, I say that when we discuss cybercrime against women, I especially see that, as I have told you, that harassment is seen through mails. सब कोई यहाँ पे email use कर रहे हैं, right? Email use करते हैं हम. In that case, we exchange our information. We give certain information, whether it is the academic purpose, whether it is for academic purpose, whether it is for any other purpose. There is rampant use of this email. But कभी आपने अपना ईमेल चेक किया है जहाँ पे आपको कुछ स्पैम आ रहे हैं, जहाँ पे आपको कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, जहाँ जो मैसेज थ्रेटनिंग, बुलिंग एंड ब्लैकमेलिंग की कैटेगरी में बैठता है, उसे हम कहते हैं ई हैरेसमेंट. I hope most of the women, most of the girls are thankfully not witnessing it. But this is a medium. Email is a medium जहाँ पे women का harassment हो सकता है, और वो harassment हो सकता है किस प्रकार से any kind of we can say blackmailing can be done, threatening can be done. Bullying is also a part of harassment. So जहाँ पे harassment होता है, it may be of any kind. ब्लैकमेलिंग हो सकता है जहाँ पे ऑब्ससीन पिक्चर या मॉर्फिंग की जा सकती है. ऑब्ससीन पिक्चर्स लेके आपको कोई थ्रेटन कर सकता है. So this is one form of cyber crime. This is specifically seen, and when it is seen, we should be aware about this kind of e-harassment. अब हम आईडी की बात करेंगे. अब ईमेल आईडीज आर ऑथेंटिक और नॉट, यानी वो सही ईमेल आईडीज है कि नहीं है, ये जानने के लिए हमें ये भी इसलिए भी सतर्क रहना पड़ेगा कि जहाँ से हम ये ओरिजिनेटर है, रियल ओरिजिनेटर, वहां से ये मैसेज हमें आया है, उसके लिए भी आप कंप्लेंट्स कर सकते हैं. दैट विल बी डिस्कस आफ्टरवर्ड. बट देन ई हैरेसमेंट का फॉर्म हम सबने जानना बहुत जरूरी है. अगर आप ऐसी कोई मैसेजेस रिसीव करते हैं जहाँ पे ब्लैकमेलिंग है, थ्रेटनिंग है, बुलिंग है, या चीटिंग कर रहा है आपके साथ कोई, या आपको persistent मैसेज भेज रहा, उसे हम harassment कहते हैं through email. This is categorized under Information Technology Act as a cyber crime. ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट जो कि हम देख सकते हैं
कि वुमन का या गर्ल का हैरेसमेंट कैसे हो सकता है, थ्रू ईमेल, जिसे हम ई हैरेसमेंट कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है साइबर क्राइम का, उसे हम कहेंगे साइबर स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मतलब किसी को फॉलो करना। अब ये फॉलो करना इज नॉट अ इन रियलिटी और इन रियल वी कैन से इन जनरल पैरेलल, जो हम समझते हैं कि किसी के पीछे जाना, इस प्रकार का साइबर स्टॉकिंग की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे फिर से हम प्लेटफॉर्म लेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे बुलेटिन रिकॉर्ड्स एंड चैट रूम, आपने पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं, बट ये मोस्टली होता है जब ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हैं या फिर आप और कुछ वेबसाइट्स ओपन करते हैं या जहाँ पे आप सब्सक्राइब करते हैं, एंड देन देयर ऑलवेज आपको एक पॉपअप आता है कि if you are having any query you can type your question in this chat room or in this chat box। जब भी ऐसे कांस्टेंट चैट रूम आपको पॉपअप होते हैं तो ये दर्शाता है कि ये साइबर स्टॉकिंग भी हो सकता है। यानी हमेशा इंटरनेट लीगल मैसेजेस या ऑथेंटिक मैसेजेस या यूजफुल मैसेजेस ही भेजेगा, ऐसा नहीं है। तो साइबर स्टॉकिंग माने जब आपको किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, किसी भी चैट बॉक्स के थ्रू या किसी भी चैट रूम में एंटर होने के लिए जब परसिस्टेंट मैसेजेस आते हैं, जिसे हम कहते हैं कि जो विक्टिम है, जो भी पर्सन है एट द अदर एंड, उसे कांस्टेंट बम्बार्डिंग यानी कांस्टेंट कंटिन्यूअस मैसेजेस आते हैं, तो हम उसे साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। सो एक तो प्रकार है ई हैरेसमेंट, जहाँ पे ईमेल इज अ मीडियम, फेक आईडी इज अ मीडियम। दूसरा जो प्रकार है जिसमें स्टॉक होता है इंसान, सो दैट कंटिन्यूअस मैसेज एक पर्टिकुलर पर्सन को भेजने के बाद he may at least reply to certain messages, or he may become a victim, or he may become the person with whom cheating can be done, with whom some kind of cyber crime can be committed. So cyber stalking is done by mostly companies, by certain organizations, by of course they may be fake and they just want to take money from you, and they are not at all interested in any other डीलिंग विथ यू, बट उनका सिर्फ उद्देश्य ये रहता है कि वो आपको विवश करे बाय कांस्टेंट बम्बार्डिंग ऑफ मैसेजेस, ईमेल मैसेजेस एंड, और आपको ये प्रवृत्त करे कि वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे लाए, और उसे कहते हैं हम साइबर स्टॉकिंग। गर्ल्स के रिलेटेड साइबर स्टॉकिंग के मायने अलग है। साइबर स्टॉकिंग मीन्स उनको कोई सोशल मीडिया जिसे हम कहते हैं, देखिए सोशल मीडिया इज डिफरेंट प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया में जैसे आप कहते हैं एफबी है, फेसबुक जिसे आप कहते हैं, फिर आप कहते हैं कि व्हाट्सएप है, इसके थ्रू कोई आपको परसिस्टेंट मैसेजेस भेज रहा है तो उसे भी हम साइबर स्टॉकिंग कह सकते हैं, because computer related and it is computer related offenses and computer related we can say crimes, इस जनरल पैरेलल्स में हम बोल सकते हैं साइबर क्राइम की साइबर क्राइम का मीनिंग है, राइट। तो आप गर्ल्स हमेशा ये याद रखिए कि जब भी आपको मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, तो आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग और बाकी के सेटिंग्स मैनेज करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस मैसेजेस आ सकते हैं फ्रॉम एनी आईडी व्हिच इज फेक। So cyber stalking is hereby done for attacking a person personally, whereby that person can be used, that person can be cheated, that person can be pressurized, that person can be threatened. ये डैशबोर्ड या चैट रूम से ये बहुत नोन प्लेटफॉर्म्स नहीं है, बिकॉज मोस्टली हम अवॉइड करते हैं चैट करना किसी भी organization का chat room में, but if you are doing so, that may be medium of cyber stalking। So आप हमेशा याद रखिए जब भी आप कंप्यूटर इंटरनेट का यूज करके कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं, वेबसाइट में अगर आपको ऐसा विंडो या ऐसा पॉपअप आता है जहाँ पे आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखना है, and then they ask you to write your queries inside the chat room and in that chat box, and they initiate the conversation
in that case you should be very cautious enough that it may lead to cyber stalking. Again, not all conversations and communication are cyber stalking. This is when we want to साइन इन सर्टन प्रोग्राम्स, तो साइन इन के लिए एक बॉक्स आता है जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन लिखनी है. That doesn't mean cyber stalking, but then if it is persistently sending you messages or persistently asking you to join this website or this program, then this may lead to cyber stalking. तो स्टॉकिंग का मतलब किसी को फॉलो करना even though that person is not at all interested, right? So harassment के बाद cyber stalking is much known and much done kind of cyber crime for women. Then cyber pornography, इसके बारे में बहुत लड़कियों ने सुना भी होगा, न्यूज़पेपर में भी आता है and मीडिया में भी this is reflected most of the time. But this is why this is dangerous to women group or why this is dangerous to female, because hereby this includes some kind of obscene material whereby it is published on internet. I must tell you that most after 2018 जो भी pornography website है और porn material है वो ब्लॉक कर दिया है गवर्नमेंट ने in the interest of by the Ministry of Women and Children Welfare. So for the welfare of the women and children. So this is how there is this is a crime. Child pornography is a crime, and any sort of pornography जो भी कंप्यूटर के माध्यम से पब्लिश की जाती है या सेंड की जाती है, that is a crime. Of course, यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन है कि देयर आर सर्टेन साइट्स व्हिच आर स्टिल इंक्लूडिंग obscene material, obscene photographs, and that is used to send to women or a female so that this is also so that they can take advantage of other women. So most of the 50% site in India are now they contain pornographical material, but then we should be very cautious that in which website we are logging in, what kind of website invitations we are getting. And again, when it comes to integrity of women, हमें ये भी जानना है कि whenever we post our photographs हमारे Facebook account पे, Instagram पे, never link your Instagram with the Facebook. जो भी आप फोटोग्राफ वहाँ पे अपलोड करते हैं, that may be converted into some other morph, converted or taken, and then it is used for some kind of obscene material, or it is used as we can say used for pornography, or there can be threat. And this is how pornography we can say independently is a cyber crime, but when it is connected with women, we can say that it is facilitated the crime related to women. Okay, किसी को जबरदस्ती via email या via Facebook या via WhatsApp group obscene material भेजना और photographs भेजना, ये आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए. This is not much talked, right? Why I say? Because we talk about the morality, principles and society. Because what society will say, what my parents will say, whether some person is sending me this kind of photograph, whether I should tell these things to my parent, don't do it. And boys, dear boys, please, whenever you find that your friend is under is witnessing such things, that somebody is sending her some kind of obscene material, obscene pictures, then help her out, then so that she can speak and she can tell these things to parents. हम जैसे बहुत सारे डिफरेंट सेल्स में काम करते हैं, एकेडमिक लेवल पे कॉलेज में हमारे यहाँ वुमेन डेवलपमेंट सेल है, हमारे यहाँ ग्रीवेंस सेल है, सभी कॉलेजेस में ये सेल वर्क करते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू such kind of complaints, we receive less response, though they are getting such kind of threats or such kind of obscene material from other boys or from known boys or unknown boys or through internet medium.
known groups, but still this is not talk. So my earnest request to all of you that you should talk about something which is not fitting into the bracket of morality. Okay, there is a morality, we should not talk about this topic, but then your social consent, social morality is much more than your safety. So it is your individual safety. Anyway, if you are witnessing that there is some kind of persistent threatening to you, which is obscene and which is going against your integrity, and through cyber pornography, somebody is trying to dominate your integrity, then yes, you should speak up always. So this is one of the form of cyber crime which is done with a woman. Another thing is morphing. Morphing is something which you may be knowing that photos are morphed. You can see memes, है ना? सबको पता होगा memes बहुत popular है youth में. Memes में फिर दूसरे पर्सन का फोटो भी आप मॉर्फिंग देखते हैं, की हुई देखते हैं, या कुछ entertainment material which is generated, that is seen. So morphing, if done for entertainment purpose, for good purpose, it is not a crime. But then if somebody is editing your picture and making a fake identity of your picture, and then it is used for some other business transactions, and it is used for some other purposes like creating fake profiles, creating fake IDs, morphing the photos on some for some obscene purposes, then it is called as cybercrime. Now, what is done? This is done illegally. This is done unauthorizedly, and your original picture is taken from one medium, and then it is downloaded from one medium, and it is uploaded and reposted on different websites, so that you can get calls from that website, and so that you can also get we can say any kind of in messages which is not good, which are not good. So there are stalkers who will take efforts to keep posting you messages continuously. There may be any kind of abusive material which can be given to you. So this is how we can say that when it comes to morphing, be cautious while uploading your photos. Be cautious while sending your photos. As well as you have to guard your profile picture, you have to guard your DP display picture, you have to guard all your photographs which you are posting on social media, that is Facebook. Morphing, therefore, is one kind of cyber crime, because mostly किसके picture लिए जाते हैं? Female picture. It is not कि female pictures, men भी cautious रहे कि उनके pictures भी use किए जाते हैं for creating fake profiles, fake IDs, and then this is how your ID or name is used. Female pictures are generally downloaded for certain obscene purposes, which is very well known example. So hereby I would say that when it comes to this kind of morphing, you should be very much cautious while uploading your photos. So I have discussed with you 3 kinds of cybercrime, जो कि सब लड़कियों को या सबको पता ही होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि थ्रू ईमेल्स भी हैरेसमेंट, ब्लैकमेलिंग, थ्रेटनिंग, बुलिंग, चीटिंग हो सकता है. बुलिंग करना यानी आपको प्रेशराइज करना, आपके पीछे पड़ के उस पर्टिकुलर चीजों को करवा के लेना, जो वो ऑफेंडर चाहता है. ऑफेंडर का इंटेंशन क्या है, ये तो केस टू केस डिफर होता है कि what kind of threatening and pressure he is inflicting on the other person, with what motive he is doing so. That is different in each case, but it may happen. So harassment आपका ईमेल के थ्रू हो सकता है. आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं जिसे ईमेल भी है, या आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, या कहीं आप लॉग इन कर रहे हैं, साइनिंग इन कर रहे हैं, वहां पे जो डैशबोर्ड जो चैट रूम होते हैं, वहां पे भी आप विक्टिम बन सकते हैं, जहाँ पे persistent मैसेज आपको आ सकते हैं, जिसे हम कॉन्स्टेंटली बॉम्बार्डिंग ऑफ मैसेजेस कहते हैं, उसे हम साइबर स्टॉकिंग कहते हैं.
साइबर पोर्नोग्राफी के बारे में हमने डिस्कस किया। मॉर्फिंग के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इट इज रिलेटेड टू योर पिक्चर which is edited and which is used for some purpose that is called as any kind of purpose of making fake ID and all. Another thing is cyber defamation. अब defamation का मतलब होता है कि किसी के नाम से किसी अनदर पर्सन का जो गुड नेम है उसे मेलिंग करना, यानी उसे डिफेम करना। हम क्या कह सकते हैं, किसी की जो इमेज है सोसाइटी में उसे लोअर डाउन करना। तो साइबर डिफेमेशन इज डन nowadays very rampantly through some kind of manner, जैसे हम कहते हैं हेट स्पीच, या किसी ने किसी के बारे में अपने व्यूज रखे हैं and then while putting up and expressing the opinion and views they have used a digital medium, social media, and this is how they defame the person. Defame the person means उसकी जो सोसाइटी में इमेज है उसे लोअर डाउन की, कि अनदर पर्सन का जो गुड नेम है इन सोसाइटी उसको हम लोअर डाउन करेंगे, उसे हम कहते हैं साइबर डिफेमेशन। नाउ हाउ साइबर डिफेमेशन इज डन इन केस ऑफ वुमेन? इट मे बी डन इन द केस ऑफ वुमेन, जिसे हम कहते हैं इंटेंशनली किया जा सकता है किसी के लिए, और किसी को जैसे हम ब्लैकमेल करते हैं किसी को, तो इट इज अ पार्ट ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम। वहाँ पे साइबर डिफेमेशन से आपको प्रेशराइज किया जा सकता है किसी ट्रांजैक्शन में एंटर होने के लिए, राइट? सो देयर कैन बी, वी कैन से इट कैन बी अ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन which is bullying you, which is using your name and which is defaming your name. So किसी पर्सन का अगर हम ऐसे यूज करते हैं, जैसे ऑनलाइन एब्यूज जिसे हम कहते हैं, जैसे ऑनलाइन इंडिविजुअल indecent मैनर, जिसे हम कहते हैं किसी का नाम का यूज करना, वो आता है साइबर डिफेमेशन में। सो साइबर डिफेमेशन जो होता है वो उसमें एक और क्राइम अटैच है जिसे हम कहते हैं हैकिंग। और आपने मोस्ट ऑफ द टाइम सबने ही एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारे फेसबुक आईडी हैक हो गई है, हमारे फेसबुक आईडी के सिमिलर दूसरे किसी ने प्रोफाइल क्रिएट किया है। तो ये किस मीडियम से होता है कि ये मोस्टली कमिट होता है कि किसी और का प्रोफाइल हमने हैक कर लिया और वहां पे हम यूज कर रहे वो प्लेटफॉर्म टू डिफेम एनी पर्सन। तो फिर आप अपने पॉलिटिकल व्यूज वहां पे दे रहे हैं, अपने सोशल व्यूज दे रहे हैं या इंडिविजुअल व्यूज दे रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं अपना खुद का नहीं बट किसी और का, और उस मीडियम से आप उसको डिस्प्ले कर रहे हैं आपके विचारों को, आपके व्यूज को, जो कि अगेंस्ट द अदर पर्सन नेम, राइट? सो उसे कहते हैं साइबर डिफेमेशन। तो आपकी फेसबुक पे जो आईडी है या आपकी गूगल में या मेल आईडी है या एनी अदर सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू उस मीडियम से साइबर डिफेमेशन हो सकता है। और उसी साइबर डिफेमेशन में आपके नाम की कोई फेक प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकता है, तो अभी आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हैक की जाएगी। जैसे आपको हैकिंग तो पता ही है कि हैकिंग माने you are all information which is provided by you, that is taken up by a person, hacked by a person, stole by a person, जिसे हम स्टीलिंग भी कह सकते हैं, ऑनलाइन स्टीलिंग। और जो हमें जेन्युइन लगती है, हमें लगता है कि this is genuinely written by someone who is having a original ID. So there are certain that is attached to different websites. This is also circulated to any kind of employment and job related sites also. So this is how साइबर डिफेमेशन होता है, जहाँ पे आपका आईडी को हैक करके आपके ही आईडी के समान फेक प्रोफाइल क्रिएट किया जाता है, जहाँ पे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज की जाती है, और वो पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज होती है टू लोअर डाउन द इमेज ऑफ द पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड जहाँ पे हमें एट द अदर एंड जो पर्सन होता है उसे लगता है कि नहीं, this information is given from genuine platform, but it is not so. So cyber defamation के बारे में भी आप सतर्क रहिए।
आपकी प्रोफाइल आईडी फेक आईडी किसी ने क्रिएट नहीं करनी चाहिए, इसलिए आपको सिक्योरिटी मेजर्स लेना बहुत जरूरी है. Then I would like to mention, apart from this 5 to 6 type of harassment against women, again harassment जो email के through होता है, cyber stalking, then cyber pornography, morphing, cyber defamation. In COVID time, I would like to discuss certain points, and this is relating to your dating app. And most of the time, it is not at all discussed with. Now, when it is said you are using dating apps, how many of you are using dating app? If you are using it, then you should be aware of the fact that it is used to create some kind of crime nowadays, right? Another is relating to confidential details, your phone addresses, phone numbers. But I would like to concentrate on this COVID-19 times, 19 times cybercrime. Okay, you cannot imagine 50 to 60 National Commission of Women के source से ये पता लगता है कि 50 to 60% of crime is done through this dating apps, right? And what is that dating app? Dating apps में सबसे important thing is that OkCupid, Tinder, ये जो है एक certain degree it's good, so that hereby you can contact other person and you can use this kind of platform. But dear students, if you are using this dating apps, then please be cautious, because it is going to take you nowhere. You may be cheated, and you may experience some kind of bad experiences like abusive, as well as some kind of sexual favors which is asked by the boys to girls. But some apps, some dating apps are okay, they are related to, they are again also associated with the social networking sites and Facebook. But let me be very clear, मैं आपको ये बता दूं कि dating apps ये सोशल नेटवर्किंग फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप ये ग्रुप पे नहीं कैटेगराइज होते हैं. दिस इज डिफरेंट, एंड फेसबुक, ट्विटर एंड अदर सोशल मीडिया इज डिफरेंट. सो व्हाट यू, व्हेनेवर यू आर falling under the dating app category, आपको क्या देखना जरूरी है कि there are certain tips to use this kind of sites, and जहाँ पे आप victimize ना हो उसके लिए legal way है. और उस लीगल वे में इट इज अ गुड आइडिया दैट you should never add your bio, or you should never add any information in this dating app. Then of course there can be a morphing, जो आपका प्रोफाइल पिक्चर होता है वो यूज किया जा सकता है in this case. So certain dating apps, they are providing certain security features, so you have to be very careful while using it. And then the security features are to be used. Most importantly, there can be a misinformation too through this dating app. Okay, again I tell you, this is not much topic like a pornography, other obscene material, and other sexual favors which are asked to women. But then when you are using this dating apps, and when you are called to meet some person, and when you are called outside, then that may be for some ill intention, that may include some ill intention. Okay, so you can see that these dating apps have because of this dating apps, there was a rise in cases of misinformation. There are cases whereby women are duped. Duped का मतलब women are cheated, and women are blackmailed, and women's photographs are captured, and this is how this is used for blackmailing purpose. So there are so many cases, I may quote so, but then there is a situation that apart from that, you can see that there is one word which is used nowadays. This is called as sextortion. It means that somebody through this dating app become very friendly with you. You befriend the person, then that person asks to
ask you for for a dinner, and then you go out, and then some certain favors are taken, and then certain sexual favors may be also taken, and then that is to be captured in the form of photographs, and this is to be this is then your images, your photographs, your pictures may be mocked, and then that can be used, and on the basis of these images women are threatened. And when women are threatened, it is called as extorting some money from them. So, sorry, extracting some money from them. So this is on rise. This is nowadays termed as by the cyber researchers as sextortion. That ये सब security component आप use नहीं करते हैं. When you get connected to technology, that case what happens? That case this kind of cybercrime happens, and newer techniques and newer terms are coming in now. जैसे हम कहते हैं we are more digitally connected, and when we are more and we are using internet, at the same time cyber criminals also became active. They are also devising the different ways and strategies so that they can make another person as a victim, and just to extract money just for their own interest. So dating apps, because of dating apps, there can be extortion, there can be some kind of favors, there can be cheating, and this is how you should be very cautious while using it, because most of the time what the students feel that we are at home, so we can use this internet, we can be on social media, we can use this app, we can, instead of study, we prefer these things. You may also think that it's okay to use it, but then with immense what security features. Another thing which I would like to hereby discuss with you is that your COVID related another threatening and another crime is related to giving your personal information. Like most of the people, they lose their job while COVID-19. So they were sitting at home. So at that time, various websites are created which is offering jobs to public at large. And when they are offering jobs, they have asked your personal information, your account details and numbers. Then you are also asked to deposit money so that you will get some good employment and job, and whereby you can work from home. This is another case which is seen in the cyber crime world, cyber law, and which is increasing. It is called as phishing. It is called as some kind of themed mail. phishing में legal language में हम कहते हैं. तो COVID-19 के वजह से ये दो चीजें on rise है, जहाँ पे main target है women, because they are at home, they want some kind of work, and for that purpose they are spreading what they are making such kind of mails, emails. This is called as phishing, which is given to different users, which is made to different persons, and this is how it is leading to some online fraud. ठीक है, ये ऑनलाइन फ्रॉड का एग्जाम्पल हो सकता है, and जहाँ पे you are asked to give your personal information, your details, your address, your phone number. So again, one important thing is that while doing so, while you are approaching any company, any website is approaching you, or whereby you want to get any kind of employment, they may be generating employment, but at the same time आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देते वक्त बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, इसलिए कि आप विक्टिम ना बने ऑनलाइन फ्रॉड का. ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में पढ़ लीजिए, पढ़ देख सकते हैं ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्राइम. बट एट द सेम टाइम कोविड-19 के बाद जो हमारा एजेंसीज है, पुलिस मशीनरीज है, एंड देन इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज है, उनका रोल क्या है ये जानना भी बहुत जरूरी है, राइट? एंड फॉर दैट पर्पस आई मस्ट से दैट certain things are added and which you all should know. Not only girls, but boys should also know this. What is that?
it is relating to your own protection. It is your preservation of right. So for that, we can say that government has taken various initiatives for protecting the girls. For how there is one investigation tracking system for sexual offences, right? It is launched very recently, that is in the year 2019, which is talking about investigation tracking system of for sexual offences. Now this is relating to uh, hereby monitor monitor sexual assault cases. Okay. Another another thing I will say here, that is seen during COVID-19, during the lockdown, that the violence against women and the violence is done. So for protecting yourself, there is a machinery which is implanted, जिसे हम कहेंगे इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस, और ये क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट हुआ 2018 में, तो आपके लिए ये अवेलेबल है। लीगल टर्म्स ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, आप ये कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं इस पे, इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये अवेलेबल है। इफ यू गूगल इट यू विल गेट इट, राइट? सो इट इज लॉन्च। सेकेंड इज दैट emergency response support system is launched. I hope most of the girls are knowing this, और सबको पता ही होना चाहिए. This is called as emergency number 112, right? This emergency number 112 is called as support system. You can dial it, and then you can also send your location, whereby your location is traced from any destination you may dial this number. Your location is traced by the police machinery, and they will respond to your complaint and they will save you. So there is another machinery, that is emergency response support system, that is importantly to be remembered. That number is 112. Second one is MHA, means Ministry of Human is our Ministry for Women and Children Welfare has launched another portal called as the portal that is called as cyber crime portal. Again, it is all these initiatives are done in the year 2018 and 2019 accordingly, and this portal is to report all kind of cyber pornography, obscene content by these citizens. So cyber crime portal, ये भी आप गूगल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन कंप्लेंट आप फाइल कर सकते हैं. So this portal is open. Another one is the cyber forensic labs are hereby set up. These cyber forensic labs are having connection with the crime which actually happens, and those who are victims, so mostly those who are rape victims and all. So cyber crime forensic lab give authentic report, and that's expedite the legal proceedings. So इसका यूज क्या है कि साइबर क्राइम फोरेंसिक लैब से जो रिपोर्ट आएगी उसके वजह से एविडेंस स्ट्रांगली प्रोड्यूस किया जाएगा कोर्ट में, और वो प्रोसीडिंग्स डिले नहीं होगी और वो फास्टर होगी. दिस इज हाउ साइबर क्राइम फोरेंसिक लैब्स आर सेट अप. Not only that, but other crimes are also detected through the cyber crime forensic lab. And in addition to that, I must mention that कि हमारे इंडिया में साइबर क्राइम से डील करने के लिए और भी अधिकारियों की जरूरत है, जिसे हम कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो लीगल रीजन से है. पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जुडिशियल ऑफिसर, सो दैट वो आइडेंटिफाई करेंगे सारे क्राइम्स को, फिर उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे, रिजॉल्व करेंगे. एंड वंस इट कम्स टू वुमेन एंड चिल्ड्रन, अगर ये स्पेसिफिकली वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए है, तो उसके लिए वी हैव अ ट्रेन्ड स्टाफ, हम उसे कहेंगे कि ट्रेन पर्सनल. So that is also, the training is also given to public prosecutor, judicial officer, so that cyber crime deal डिटेक्ट हो सके और साइबर क्राइम के बारे में साइबर क्राइम से वुमेन एंड चिल्ड्रन को हम बचा सके. Another project is Safe City project.
जैसे सैंक्शन किया मोस्ट ऑफ द सिटीज में। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जैसे है ना, वैसे ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट है। आप रात में पेट्रोलिंग देखते होंगे। देयर इज अ वुमेन स्क्वाड आल्सो, देयर आर that is called as Mahila Police Volunteers, right? So Ministry of Women and Child Development also with the Ministry of Home Affairs, that is MHA, they are working together, and they are now devising the ways to protect specifically women. तो जहाँ पे सेफ सिटी प्रोजेक्ट में आप महिला पुलिस वैन देखेंगे, महिला पुलिस वॉलंटियर्स देखेंगे, and they whenever they find such incidents is happening, they becomes the link in between the person who is giving you justice, and they are also linking themselves with the society, so that police is there to help you. There are different platforms जहाँ पे आप अपने grievances लेके जा सकते हैं, and वो grievances specifically जो Ministry of Home Affairs ने Ministry of Women and Child Development ने किए हैं, वो मैंने कुछ ही यहाँ पे मेंशन किए हैं. There are so many. There are other agencies too, mechanism too. But yes, for girl safety, you should always be aware about investigation tracking system, जहाँ पे आप अपने assault cases बता सकते हैं. Then आप यहाँ पे ये 112 नंबर, then cyber crime portal, cyber crime cell नागपुर में भी है. तो साइबर क्राइम पोर्टल पे जाके आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है. And lastly, you may also file your cases with the Mahila Police volunteers who are engaging specifically to deal with the cyber crime and those women who are victims, right? So ये सारी चीजें जो है लॉ की याद रखिए. Apart from that, we are having certain laws. What are these laws? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 तो है ही, जो कि मेनली साइबर लॉ है, साइबर केसेस से डील करता है, जो कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करता है. साइबर सिक्योरिटी यानी जो भी क्राइम हो गए उसके अगेंस्ट हमें क्या प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, दैट इज डिस्कस अंडर दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई भी वुमेन या कोई भी गर्ल का सेक्सुअल हरासमेंट होता है एट वर्क प्लेस, एट कॉलेज, देन देयर इज एक्ट कॉल्ड एज सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट. आपके कॉलेज में भी देयर मस्ट बी सेल, और आपको इसके बारे में वो सेल टाइम टू टाइम जानकारी देता ही होगा थ्रू डिफरेंट वेबिनार्स एंड थ्रू लेक्चर, आई होप सो. So this kind of act is also available when women are witnessing the sexual harassment. The next one is Indecent Representation of Women Act. Here this is related with our IPC also. Whenever there is lowering down the dignity and integrity of women, then this act can be invoked, that is Indecent Representation of Women Act. These are major laws. There are so many other laws too. Of course, I have pointed out only those which are important in relation to women, and in relation to women hereby specifically to deal with the cyber crime. Hereby they are closely related with the Information Technology Act, right, which is mostly amended in the year 2008 with the other provisions, other kind of cyber crime. So for that, I would like to mention one procedure. जैसे हम कहते हैं ना कि हमने तो लॉ के बारे में भी समझ लिया, हमने कौन से प्रकार के साइबर क्राइम है वो भी जान लिए, बट व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर अप्रोचिंग एनी साइबर सेल और पुलिस स्टेशन? इट्स वेरी इजी. आप साइबर क्राइम में अगर विक्टिम है तो आपके डिस्ट्रिक्ट में नियरेस्ट साइबर सेल, साइबर क्राइम पोर्टल भी है. पुलिस स्टेशन में जाइए, पुलिस स्टेशन में आप साइबर सेल से कनेक्ट हो सकते हैं, एंड वहां पे आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. एंड आप अपनी कंप्लेंट, आपको आपका नाम नहीं बताना, तो उसके लिए पोर्टल है cybercrime.government.in, जहाँ पे आप नेशनल साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं. तो इसे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल कहते हैं, cybercrime.government.in, जहाँ आप आपका नाम, आपकी आइडेंटिटी ना बताते हुए एनोनिमसली कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. जनरली मोस्टली वुमेन डू सो,
because of pressure, society, and morality concerns and other societal issues. But then, of course, don't fear about it. If you face any kind of cybercrime, go for it, file a complaint. So this portal is also important for you. Then another one is, I think, these are the two things which is to be seen while the procedure is mentioned. Now in procedure there are other aspects too कि आपको कौन से documents लगेंगे, आपने कौन से evidences देने चाहिए, so that is also discussed. But now this is not this is something which is important and notable one. So I have mentioned that आप cybercrime.government.in पे अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं, या आप नियरेस्ट साइबर सेल में या पुलिस स्टेशन में जाके भी अपनी साइबर क्राइम रिलेटेड रिपोर्ट दे सकते हैं. अब इसके बाद है सेफ्टी मेजर्स, जस्ट टू save ourselves from all those crimes which is happening around us, and we should not become a victim, and we should also protect others from becoming victim. तो उसके लिए आपको कुछ चीजें अवॉइड करनी है और कुछ ऑनलाइन सेफ्टी मेजर्स देखने हैं. ये आपको हर एक महाराष्ट्र जो MHA की साइट है, मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर, उसकी साइट पे भी ये आपको मिलेगी. तो उसमें से ही ये सोर्स से मैंने लिए हुए कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे आपको अवॉइड करना है कि आप कोई भी ऐसा ऐप ना इंस्टॉल करें जो आपको मैसेज करता है persistently, so that you cannot become a easy prey for those who want to harass you through mails. Then आपके मोबाइल की या आपके डेटिंग ऐप की या आपके कोई भी जो भी ऐप्स आप इंस्टॉल करते हैं उसके जियोग्राफी सेटिंग्स भी देख लीजिए, क्योंकि साइबर jurisdiction is also a vast area. Cyber crime may happen from any part of country, outside country. International fake callers होते हैं, international fake profiles and IDs होते हैं. So this is how you need to again manage your geography setting. Then आप जितना हो सके अपना काम पर्सनल डिटेल्स प्रोफाइल्स में रखिए या अवॉइड ही कीजिए लॉट्स ऑफ डिटेल्स डालना. ये चीजें हैं आपको अवॉइड करनी है. एंड आपको सेफ्टी मेजर्स क्या लेने हैं कि जैसे ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए या कोई भी ऑनलाइन चीटिंग से बचने के लिए कोई भी इररिलेवेंट मैसेजेस, फोन कॉल्स एंड कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप किसी को शेयर ना करें, ना दें. जो भी फ्रॉडुलेंट वेबसाइट है और विच आर द लीगल वन और विच आर रिकॉग्नाइज वन वेबसाइट, इसका आपको डिस्टिंक्शन करके आना चाहिए. यू शुड नो विच इज अ फ्रॉडुलेंट वेबसाइट and which is not. So this is how each and every website, each and every app is having safety special features for safety, privacy settings. Then you are having privacy policies. So you need to follow it, and you need to install it. You need to protect your own ID. And whenever you are dealing through mail IDs, then you have to be very much careful while using your password, sharing your information, because each and everything can be hacked. We think that nothing is seen nothing is seen, but everything is seen, everything is shown, and everything can be hacked. So this is how we have to be very careful when it comes to online related things, sharing of data or dealing on a digital platform. For women it is very important because this is just an awareness which I would like to project through my PPT, that those who know it, I'm happy, those who know about this kind of cyber crime, but those who don't know it, they just go on reading about these kinds of cyber crime and other cyber crime, and they should be alert, careful, and protective, right? So I think time permits me to discuss and deal with these kind of cyber crime, and I have tried my level best to project the kinds of cyber crime and the process, role of law, the agency, as well as the procedure, and also certain tips which you should know while dealing online. So that's all from my part. Thank you so much. If you have any questions or if organizers permitting me, then I can take it. Over to you, madam. Thank you so much, ma'am. Any questions from the participants?
we did not find any in the chat box, but if anybody wants to ask anything, you can go ahead. I think we'll get the questions later on, and if I get them, I will definitely share with you, ma'am, and would want your opinion on that. Thank you so much for this informative session. I'm sure the students as well as teachers will definitely benefit by these things. I request my colleague and NSS in charge, Dr. Narendra Raghatate sir, to propose a formal vote of thanks. धन्यवाद मॅडम. आदरणीय मान्यवर, आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना, आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर बनना, अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की, गौरव हो अपनी संस्कृति की, आहट हो स्वर्णिम आगत की, तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है, अपने कर्मों से रचना. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा. नागपूर शिक्षण मंडळाद्वारा संचालित श्री बिंधाणी नगर महाविद्यालय नागपूरच्या लाईफ लॉंग लर्निंग अँड एक्सटेन्शन सेल व राष्ट्रीय सेवा योजना NSSच्या वतीने आयोजित या आंतरराष्ट्रीय जागतिक महिला दिनी कार्यक्रमाला लाभलेले अध्यक्ष आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर सुजित मेत्रे सर, जे आमचे सदैव प्रेरणास्थान राहिलेले आहेत, त्यांनी अध्यक्षीय वक्तव्यातून आजच्या विषयावर ज्या टिप्स दिल्या त्याबद्दल सरांचे शत धन्यवाद. आजच्या कार्यक्रमाला लाभलेल्या वक्त्या डॉक्टर प्रतिमा लोखंडे मॅडम यांनी वुमन्स सेफ्टी इन डिजिटल वर्ल्ड, रोल ऑफ लॉ अँड एजन्सीज या विषयावर जे कौशल्यपूर्ण आणि अभ्यासपूर्ण मार्गदर्शन आजच्या दिनाच्या औचित्याला अनुसरून केले त्याबद्दल मॅडमचे खूप खूप धन्यवाद. महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉक्टर संदीप कुंडेरवार सर यांचेही या प्रसंगी मी आभार व्यक्त करतो. कार्यक्रमाचे आयोजक लाईफ लॉंग लर्निंग अँड एक्सटेन्शन सेलच्या इंचार्ज डॉक्टर प्रांजली काने मॅडम व NSS इंचार्ज डॉक्टर मेहरवानी मॅडम, ज्यांच्या अथक परिश्रमाने हा कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार पडला, त्यांचेही धन्यवाद. सरते शेवटी झूम मीटिंगच्या माध्यमाद्वारे जुळलेले आमचे सर्व ज्येष्ठ व श्रेष्ठ प्राध्यापक वृंद, विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही या विषयाला शांत चित्ताने ऐकून व समजून घेतले त्याबद्दल महाविद्यालयाच्या वतीने सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानतो व कार्यक्रम संपला असे अध्यक्षाच्या परवानगीने जाहीर करतो. धन्यवाद.